So I will give all of you some 1 or 2 minutes to get the notebook and pen. All right? जैसे ही आप सभी लेकर के आते हैं, you guys can put in the chat box that yes, I have kept the notebook and pen. All right? Yes? Okay. So now people are connecting with us in today's session. बुरहान भैया, मुझे बताइएगा जब शुरू करना हो. बस 2 मिनट्स हो. गरिमा दीदी अभी तक जुड़े नहीं है. ओके. तब तक के लिए चलिए मुझे बताइए आप लोगों का आज का दिन कैसा गया. स्कूल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं. यस, एवरीबडी इज गैदरिंग देयर नोटबुक एंड पेन. बाकी जो भी लोग अभी तक नहीं लेकर के आ पाए हैं नोटबुक और पेन, वो ले आइए तब तक, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ बिट ऑफ एक्सरसाइज विद लाइक आर जो हमारे जो आज गेस्ट होने वाले हैं वो हमें एक एक्सरसाइज देंगे नोटबुक और पेन की, उसके लिए जरूरत है. So yes, somebody's Ambika is saying my offline schools are going on, but today was my holiday. वाह भाई वाह, हॉलीडे मिल गया, एक्स्ट्रा बोनस मिल गया. मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में जाया करता था और हमें जब पता चलता था आज स्कूल नहीं है, वो दिन तो ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार है, फेस्टिवल है. So yes, congratulations Ambika, अगर आपकी आज की छुट्टी थी तो. So today's day went very well, but exams are coming. Okay, this was said by Yutika. Yutika, best of luck for your examinations. आप अच्छे से अच्छा करेंगे. काम माइंड के साथ अगर एग्जाम करेंगे तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा. एक्चुअली मैं 4th में और मेरे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं. ओह, 4th क्लास में आप. फाइनल एग्जामिनेशन से पहले ऐसे धक धक तो नहीं हो रहा है? होता है. ओके, होता है. तो कैसे उसको काउंटर कैसे करते हो? वो तो हम काउंट नहीं कर सकते. अच्छा, नहीं काउंटर एज इन उसको डील कैसे करते हो उसके साथ? डीप ब्रेथ लेती हूँ. वाह भाई वाह. तो युतिका बता रहे हैं कि वो डीप ब्रेथ लेते हैं. ये मैं भी नोट रखता हूँ, मैं भी आगे से ऐसे ही करूंगा. देखिए फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं. ओके, सो हमारे जो ट्रांसलेटर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. सो एवरीवन, आई वुड रिपीट माई सेल्फ. This session is going to be in English. The first chunk of it is going to be in English, and you all of you who want to get the Hindi translation, you can select the more option in your Zoom app, and then you can select the translation. So this first chunk you are going to get the Hindi translation. So I and the guest are going to have the conversation in English, and all of you can get the Hindi translation. If you are comfortable with English, you can just listen to it directly. All right. So everybody clear? Yeah. So should I start? Yeah. Okay. So in today's session, we have a very special guest who is connecting with us. And who is that special guest? All of you must have seen that flyer, right? The poster of today's program. The theme is making friends with the environment. So this is the very first time that I am listening to this, that we can become friends with the environment. So today's guest is Sister Sonia. So hello everybody. Hello everyone. Kindly wave your hand. Yeah. So I'll just introduce Sister Sonia with everyone. So Sister Sonja Ohlsson is International Coordinator of Brahma Kumaris Environment Initiative. She's also a meditation teacher. You can just see that on her face that she has been practicing meditation, right? Such a brilliant smile. And she's also a meditation teacher with the prison and probation service in Copenhagen, and occasionally gives lectures at the Asian Studies Department at Copenhagen. Everyone, Copenhagen, do you know where is it? It is in Denmark. It is in the Denmark country. And she gives lectures at the Asian Studies Department at Copenhagen University. Previously, she worked as a community nurse for more than 20 years. And she was born and raised in Sweden, and she has been based at the Brahma Kumaris Center in Copenhagen since 1988. All right, so she is the director of that center. Now, talking about the environment, because our today's topic is related with environment.
So she has been, she has been pursuing everything, whatever is required related to the environment. And she is the BK environment. So there's a delegation. There's one initiative that has been taken by Brahma Kumaris related to the environment. So she's also part of that the initiative delegation. So the BK Environment Initiative Delegation has been actively participating every year in the United Nations conferences. So all of you know about United Nations. Kindly put down in the chat box if you know about United Nations. So they participate in the United Nations conferences and on which is related to the climate change since COP15 Copenhagen in 2009 and the UN Conference on Sustainability Rio +20 in Rio de Janeiro 2012. And with the theme of the power of human awareness in safeguarding biodiversity. They have participated in the biannual UN conferences on biodiversity since 2012. So she's a complete personality. Not only she is working on human nature, the inner nature, but also our mother nature. So she's the fitting personality who can, in the present time, who can tell us about how we can transform our human nature as well as we can become friends with the environment and mother nature. Right. So everyone, kindly welcome Sister Sonia. Sister Sonia, over to you. That was a very long introduction. Thank you for that. And I'm just really delighted to meet the future of India by meeting all of you children. And I am from a very cold country, Copenhagen, Denmark, and it snowed and stormed there just now. But I came to India now 1 week ago, and I'm very much enjoying the sunshine you have here. And yes, today's topic is about environment. And if you think about it, every breath we take, we breathe in the air, right? And that's the environment. Every time we eat something, we eat from the nature and from the environment. Every time we drink water, we drink from the environment. But the environment, she is not very healthy at the moment. We talk about Mother Earth, and Mother Earth has become a very old lady now. She's like in hospital. An old lady in hospital, and she's very ill. She can't breathe, she can't walk, and her stomach is not well, her eyesight is not well, she can't hear anymore. So we have to look after this old Mother Nature lady very well. But today's topic is making friends with the environment. So let me share my screen here, and I hope you can see it. Can you see this? Yes. And so making friends with the environment. And what do good friends do? What makes a good friend? Good friends help each other. They help each other. Very good. What more? What more do good friends do? Take care of each other. They help each other. They share. They take They- care of each other. They take care. They share. Yeah. Yes. They share and they care and they help. And there is one more thing they do. They will also listen. Is that right? Yes. Yes. A good friend will listen to your stories. A good friend will listen to your problems. A good friend will give you time. This is what friends do. They share time together and they are good listeners. So if we want to become friends with the environment, then we have to listen to Mother Earth. Is that possible? Yes. 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 So now I'd like you to imagine that you're sitting under this tree. Can you imagine that? Isn't it a beautiful tree? Yes.
It's fantastic. 2 trees actually. It's not a banyan tree, but it could sort of be a banyan tree maybe. I don't think this is in India actually. But I'll ask you to imagine that you sit under this tree and you listen to the tree. Okay? Yes. And then we can take a little moment in silence, and you listen what the tree is telling you. And if you want, you can write it down or you can draw the message of the tree to you. Okay? So we take a minute in silence. So you can just ask them to bring paper because few of them are new. Recently. Yeah. So what shall I do? You can ask them to get a paper and pen. Yes. Yes. So if you don't have paper and pen, you get it now. And then you come back and you look at the picture, and in your mind, you go to a favorite tree. Maybe it's in your garden, maybe it's around the school, maybe it's in your grandparents' place, you have a tree, and you imagine you sit under the tree. And you can feel the roots. And you sit with the back towards the big trunk. And you can hear the wind moving the leaves. And if you listen carefully, the tree wants to tell you something. It has a special message for you. So when you hear this, you can write it down. Okay, could anyone hear the trees talking to you? Yeah, maybe we can have a few people sharing. I would be so happy to hear what the tree said. If you want to write it in the chat, or if our moderator can translate for me, or a few people share. Yes, you had Rajveer here is putting his hand up. You can share. Can you speak English? Yes, ma'am, I can speak English. What did the tree tell you? The tree told me that it was a mango tree. So it told me that don't cut me for wood, because I will always give you fruits. Yeah. The tree gives you fruits. Yeah. And if you do not cut me, I will be your best friend. Yeah. And so then you are grateful. You thank the tree for the fruits. Yeah. Thank you, tree, for fruit. Ah, how wonderful. Rishita, what did the tree tell you? The tree tell me that don't cut me because I'm being here for you only. I couldn't really catch that. I think the connection wasn't so good. It tells me that we shall not cut it because it is here for us only. Yeah, the trees is there for you, so therefore we should not cut the trees. Yeah, this is so important.
The tree is sad because it can see our future, that it won't be there, it would be absent, and without it we won't be able to survive. Yes, indeed. We need the trees for oxygen. Yes. Right? We need the trees so we can breathe. So the tree says, and the water cycle is also because of the trees only. Yeah. So the trees often says, come and talk to me and I will guide you, and come and sit under me and get some shade. And then you remember the fruits and you feel grateful. And then you remember all the oxygen we get and you feel grateful. And you don't want to cut trees and you don't want to harm the trees because they are our friends. Okay, do you think that stones can talk? Rocks and mountains, can they talk? Shall we try? Let's go to next. Of oxygen that we need to breathe. Yeah, let's go to this picture. This is a big rock. This is Baba's rock in Madhuban. And you see, I often sit here and the rock speaks to me. Or you can sit on any stone. And you see the rocks can keep secrets for so many years, right? For hundreds and thousands of years, people have been sitting on these rocks, and the rock can keep all the secrets and every thought of every person. So now I'd like you to imagine that you sit on a stone or you sit on a rock, and you lean the back and you feel the warm rock and you listen. Okay? Now we listen to our good friend, the stone. And when you can hear what the stone says, you can write it down. Sister, I want to show one drawing which is related to Earth. Yes, we can wait a little bit. So we just need a little bit of silence so we can hear the stone, right? And then we look at your picture, okay? Okay, could anyone hear the stone? Anyone who hasn't said anything yet wants to share? You want to show the drawing also? Yes, ma'am. Okay. The stone says to me that give the secrets, and I will translate that to Baba. Oh, the stone will give you secrets and you will translate to Baba. Oh, this is so nice. Stone tell me that I will understand. You tell me what you are thinking and what is your secret. Yeah, so the stone understands you. Wow. Isn't it wonderful to have someone who understands you so well? The stone says I have dust. I have what? Dust. Oh, I didn't get that. The stone said I have dust. Okay, okay, fantastic. And someone wanted to show a drawing? What was that? Who wanted to show a drawing? It is me. This is the drawing. Now I have to find you on this. Okay, 3 ends.
It is saying plant a tree and see earth revive. Yes, yes. Thank you, thank you. Okay, thank you so much. So what shall we take next? What shall we take next? Who do you want to speak to now? I was thinking we could try this and hear what the birds say. Is it someone here who likes animals? Is someone here who likes animals? I think everyone do, isn't it? And you know the birds, they speak a lot. Myself, sometimes when I don't know what to do and maybe I couldn't understand something, or I'm a little bit confused, or then I go and sit in nature and I let the birds speak to me. And they will chatter and they will sing for me and they will make me so happy. And the birds, they always have good ideas. So now maybe you can lean back. You can lean back and you imagine that the birds are singing for you. You imagine that the birds are singing. And now I will read the chat also, so you can put me in the chat what the birds will say to you. But let's take a little bit of silence and see if you can imagine with your fantasy, if you can hear the birds. And what are the birds telling you today? One thing is what happened yesterday or the day before or last week, but in this very moment, you see, the birds are very much in the moment. They don't think of yesterday or tomorrow. They just think of this beautiful moment and they sing for you. What do they sing for you about today? We can take a bit of silence to listen, and then I like to hear, and I will read the chat also. Okay. Now I want to hear if you could hear. Could you hear the birds? Didi, can I say? Yes. Yes, Didi. What did the bird say to you? What did he sing about? Didi, the bird says that to not put me in a cage and fly me in the sky. Yes, yes. Nobody likes to be in a cage, isn't it? They become very, very sad. Didi, can I tell you what I heard? Yes. I heard that the Didi, can I say? Because when I cut the trees, I am destroying their house. Say that again. When I cut the trees, I'm destroying their home where they live. Yeah. I should not do that. Didi, can I say?
Yes, just that, you know, the trees and the birds are connected, isn't it? So if you destroy one thing, you destroy a second thing also. We don't only destroy the trees, but we destroy the homes of the birds. Didi, Yeah. can I say? Yes, please. The poachers catch the birds for their feathers and their body organs, like peacock, and catch them to sell. So the bird said that do not catch us. The birds are Didi, can I say tune and they're making me happy, and they're paying their gratitude to me. Thank you, you are not here for hunting me, and that you are not cutting my and destroying my homes. दो मिनट के लिए वेट कर रहे हैं, शायद दीदी किसी कारण से डिस्कनेक्ट हुए हैं. Hello. Meanwhile, all of you who have written the messages and who have made the notes, you all can drop it down in the chat box. The sister will read it from the chat box itself. So kindly put down whatever you have written in the chat box. Yes. Okay, so everyone, our faculty gave us a bit of exercise. She told us that if we are going to listen a bird carefully, what is that bird going to tell me? What is that bird going to share the secrets, her secrets with me? So we got this exercise and there are people who are sharing their thoughts. So yes, let me just read it. So Nishchal is saying, the bird trying to say that, wait for your turn. Okay, interesting one, Nishchal. And we have other messages that we are receiving. So Satvik said that, be free like me, stay happy. What a beautiful thing the bird said to Satvik. You also have other messages. BK Kamya is saying that, sing with us and I also want to fly. Basically, her bird said to her that I also want you to fly with me, along with me. Nadish and Nirbhik, the bird said to them was, birds cry for their life as we destroy their home and don't let them live in the forest. So yes, we all agree, right, that we are chopping down the forests because of the human greed, right? And because of the desires, human desires. Sometimes we want big, huge sofa in our house, and because of that, we chop down the trees. So is it good or is it bad? Don't we want sofa in our house? Yes? No? Do we want sofa in our house? But what we can do is we can get the sofa, but we don't really need unnecessary thing in our house, right? We fill up our homes with furniture, right? Sometimes there is furniture which is of no use. What we can do is we can cut down our desires and we can just have that much which is required to live, to sustain, right? So yes, we are also receiving some few more messages in the chat box. So Aditi is saying, please don't cut my tree. This is my home. I think Sister Sonia is connected with us right now. Once again, are you able to listen to me, sister? Sister, your audio is not connected yet. The bird says, I am a lovely being. I am lovely wing Of nature. of nature. Brilliant, brilliant.
So Kride just said that her bird said that she is also Lovely being of nature. lovely being of nature. So we are again trying to connect with Sister Sonia. Meanwhile, you guys are typing down your replies and your whatever you thought, and the bird spoke to you. All of you can just put it down in the chat box. Meanwhile, I'm also going to share a bit about myself because some of you don't know about me. I'm going to again introduce about myself as well as the guest speaker who is again going to connect with us. So, hello, my name is Yashwardhan. So, because many of you just connected later on after when I gave my introduction as well as the faculty's introduction. So, my name is Yashwardhan. Sister Shivika is not connecting with us today because she had an urgent assignment and she had to leave for Chennai. And because of which I was given this responsibility to become the host. And I have been connecting with all of you because I was given the responsibility to become a translator and translate whatever was being said in Hindi or English to Hindi and English. And so I was doing that job. Right now, this session is also being translated into Hindi. Right now, the first session is being translated into Hindi. And all of you, if you want to get the Hindi translation, you can select on the more option. Now, talking about myself, I was, yes, I was serving as translator, but also some of you got the chance to speak onto radio, right? Few of you got the chance to speak on radio, right? Radio Madhuban, right? I'm seeing Ambika. Ambika is nodding, right? So I see a few of you have got the chance to actually speak in radio. And let me tell you, I have my own show, the evening show on Radio Madhuban. Its name is Khushi Ke Nagme and Dil Ki Baatein. So I'm part-time RJ over there in Radio Madhuban. So did you like radio experience? Who all got the radio experience? Did you like the radio experience? Right? So I also work as the part-time radio jockey on Radio Madhuban. And I was, in my past, I was working in Baiju's classes. So you might be knowing about Baiju's classes, right? You might have received their education content. Yes, somebody is trying to speak. Yeah. For Baidu app, you work on Baiju's app? Yeah, so I was working in their animation department, and I got a chance to create the content for children like you in Baiju's classes. In my past, I'm not working right now over there. Because I will connected the Baiju's class. Today is given me a book of the Baiju's class. Great, brilliant. So I was working with that company, and after that, I was also serving in Madhuban in Mt.Abu. We all gathered in Mt.Abu for the winter carnival, right? Yes. And I couldn't actually be with you in Madhuban at that point of time because of some other work that I had to finish off. But actually, I was supposed to visit for the winter carnival. I couldn't get the chance. And yes, after that, I was serving in Madhuban. I was serving in the animation department over there as well. And right now I'm learning to code. So all of you, you know, right? Even you guys are studying, right? So some of you might also be learning code. I'm doing it right now at this age. Yes, at every age we can learn. This is about also give you the introduction about Sister Sonia. She has been actively serving not only as a meditation instructor but also in the environment related issues, and she has been actively participating in United Nations conferences. And just recently we had a COP summit in United Nations, right? Do you know about it? Scotland. It happened in Scotland. So what happens in COP is basically everyone, the Prime Minister, even our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, he went to Scotland, and other Prime Ministers and Presidents, they gather around and they talk about nature, right? How we can save our Mother Earth, right? And this time there was a deadline that if we are not going to save our Mother Nature, soon all of us are going to die.
Why? Because of the environment and health related issues, because of the pollution, because of the harm that we are giving to the nature, right? And so because of that, so she has also been participating in COP. So she also went, our guest, Sister Sonia, she also went to Scotland. There was one delegation which went to the which went to the COP, and they discussed about how we can safeguard this environment, and we can basically Earth. And he also participates in United Nations conferences. So all of you know about United Nations, right? So United Nations is basically a group of nations who work for prosperity and peace building, right? So she also participates in those conferences. Now she gave us a bit of task, and everyone, I can see that all of you are actually, yeah, so I'm receiving some messages that people are saying that I also love coding. I also know coding. Okay, yeah, people do know. Yeah, all of you are very active, and yeah. So Avni shares her note that don't take my eggs; they are my children. So yes, Avni, I think her board directed that she does not want, her eggs to be taken away. Okay. So there's one kid, Shashwat. He says, "What do you know about coding? Give an example." So I think this is going to be my test, right? Shashwat is going to take my test. All right. Okay. Beautiful comments that we are receiving in the chat box. Okay, so कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण अभी दीदी जुड़ नहीं पाई है। अभी जुड़ी है, रुकिए। Okay. All right. So meanwhile, yes, she just connected. I think, Burhan bhai. Yeah, she's back. Yes, hello. I'm so sorry. I'm so sorry. Yeah. So, sister, the children, they dropped down beautiful comments in the chat box. Meanwhile, yes. Yeah. So you can read them. You gave the exercise that there was this bird, and that bird spoke to us, right? Yeah. Yeah. So you can. Yes. They are singing and don't cut homes. Wow. I think don't think about the past or future. Enjoy the moment. Oh, yes. I would love to fly. You see, there's so much we can learn from the birds, isn't it? No one of us want to be limited. We want to feel free. We want to fly. So please make the birds your best friend. That's fantastic. आप जो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई नहीं दे रहा. Now I have a last exercise for you, and this is a very big exercise. Are you ready? Before you give us the exercise, sister. Yes. I think there was one child who just said that she wasn't able to hear you. भाईजी आप मैं जो बोल रहे हैं वो हम नहीं सुनाई दे रहा हमें. So I think Sudeshna is not able to hear us. The rest. Sudeshna, आपने interpretation on किया है या direct सुन रहे हैं? मेरा voice हाँ किया है. आपको मेरा आवाज तो आ रहा है ना अभी? हाँ. तो दीदी का भी आ ही रहा होगा ना, सोंजा दीदी का भी? हाँ पर नहीं आ रहा. अभी आएगा. All right. Yeah. All right. Are you ready for the last exercise? Are you ready? This is your examination. Now we are going to listen to the whole earth, the whole globe. You think that's possible? You think that's possible? We're going to listen to the whole globe. Mother Earth, this very old lady who needs your love and care. So you sit super still. And then you put your hands like this. And you put the Mother Earth in your hand. And you can feel her in your hands. And then you listen.
and listen what she has to say. Okay, we take a moment of silence. Okay, are we ready? Can we hear her? Can we hear what the whole globe is telling to you? Because you are the future of this Mother Earth. So you will have to look after her for so many years. Maybe you can put in the chat what's it told you? Didi told me that. Oh, she said, Mother Earth said that don't cut the trees, don't pollute like air pollution, otherwise we can't live. And please don't hurt me. Yeah. The earth says it provides place to live. Say that again. And it gives food. The earth says that it gives place to live. And it gives food, shelter, air, and all other basic things. Yes, yeah. And how do you feel when you think of that? Mother Earth told me that please save me. I will give you my part of my earth and my children who are inside, but please save me. Yeah, please save me. The mother told me that reuse and recycle things. Yeah, we need to recycle. Didi, our Mother Earth says that you should save me. You should not make pollution. You should not cut trees. Or how there would be air. You can't breathe. Yeah. That's our Mother Earth says. Yes. Do you think you can talk to your mom and dad tonight about what Mother Earth told you and what the rock and the trees and the birds told you? Do you think you can talk to your mom and dad? Didi? Yes. Okay. Yes, Didi. The Mother told us that if you plant trees, I will be very happy. Yes. The Mother Earth says, you should give me water and you should do not do pollution in the world. Yeah. I will be very happy. Yes, yes. Mother Earth said that don't pollute the air because I'm dying. Yeah. So pollution is a big problem. How do we stop pollution then? Didi. And don't harm me. Yeah. Didi, the Mother Earth, do not cut trees. I'm really happy about it, and she's also telling me that like other people that they must save me because we're not having a planet B. Yeah. So don't harm Mother Earth, plant more trees. Mother Earth is your friend. Ma'am, the Mother Earth is our friend. The Mother Earth is trying to say don't pollute the environment. Yeah. You don't have to pollute the environment. Yeah. Ma'am? Reduce plastic. I'm your friend. Yeah. So will you listen more to the birds and the stone and the sky and the grass and the tree? And then you will know what to do. Yes, so much we can do. Reduce plastic. We can recycle.
You can talk to your parents about this and ask what they are doing. Yes, no planet B. Plant trees. Yes. Sister, the best thing we can do is send good vibrations Yeah. to the earth. Yeah. Shall we do that together now? Is that a good idea? Yes, ma'am. Yeah. Yes. Mother Earth told me that I will give you everything. You are my friend. Yes. And then what will you give back? That I will grow plants and I'll help you again. Yes. And we will also give good vibrations to Mother Earth, isn't it? Like you do to good friends. You send love and care. So let's do that together. And Didi, we can help the mother by not wasting electricity. Plant more and more trees to help absorb excess carbon dioxide. Yeah. I know. The earth said, I have people. So now we can see. Thank you so much. You've been so wonderful to work with, and you must be the best friends of all good friends. And you're also good friends of Mother Earth. Do you see this picture here? So now let's sit together and we can send good vibrations, okay? So if you mute yourself and we take a moment in silence and we send good vibrations. Are you ready? Yes, Didi. Yes. So if you mute yourself and you sit silent and you look at this picture and we will together send good vibrations. So I'll ask you to sit relaxed in your chair. Sister, can the screen be full screen? Sorry? Can you full screen the slideshow? Full screen? Yeah. Oh, I'm not sure I know how to do that. Burhan bhai, I think there's one specific button that can do that. If you can tell her about that button, if you know about it. You can just press F5 or shift F5. Or in the near 51%, there is a slideshow button. You can see, click it. It will look good. Yeah, it's full screen where I think look. Shared the other. Actually, there might be two windows in the sharing option. You might have used the this instead of full screen. You had used this one, I think. Maybe, or we can go like this. No problem. Yeah, we go like this. No problem. So you're ready? Yes, it's so we'll sit quiet in the chair. You relax. And you relax your legs. And you can feel the floor under your feet. And under the floor is Mother Earth. Then we take a deep breath together. I breathe deeply to the bottom of my stomach. And I relax. And I remind myself that I'm breathing the same air as everybody else on this planet.
I go inside with my mind and I remember who I am. Deep inside, I'm my own best friend. Deep inside, I'm an eternal soul. And I become very peaceful and quiet. And then I connect to the Supreme Soul. I remember who I belong to. I remember the light of God. And together now, I, the soul, the Supreme Soul, and all of us, we will send good vibrations to our planet, to Mother Earth. You imagine that you hold her in your hands. You put Mother Earth in your hands and you care for her. And you put your angel wings around Mother Earth and you can heal the pain of all the trees that's been cut, of all the animals that are suffering, of all the places where there is not enough water, and all the places where there is too much water. We send good vibrations, love and peace, and compassion to all of these places. And in your mind, you can go to your favorite tree and you sit down with the back against the trunk. You hear the birds, you see the sky. And you remember all the good things you heard today, what the birds and the trees and the stone talked to you about. All the messages you got. So sit for a moment and I feel grateful. I say thank you to Mother Earth for the water and the air and the food, for the trees we can play in. I say thank you in my mind. I say thank you to the animals. And I promise not to hurt my friends. I promise not to hurt myself or others. I promise to walk gently on Mother Earth and not to use more than I need.
I promise to be a good friend with the environment, with Mother Earth, forever. Then we take a deep breath. We come back from the meditation. And we say thank you to each other. And I just want to show one last slideshow. And here you see we have a website here. This is a carrot. You can see a carrot and it's a little soul light in the carrot. You see most... we can't see that slide that you're showing. We can reshare, I think. Okay. So here is I can put it in the chat for everybody. I put stop share. No, you can just reshare it. Just reshare it. It will work. Okay. Can you see this? Yes. Now yes. Could you see the previous slide then? No, previously we just see only the globe, but it was also not in the full screen. Okay. Now you have here, you see here we are holding the earth together with the light. And here we have the last page. Here you have a website where you can read everything Brahma Kumaris is doing for the environment. And we have the Green Angel meditation commentaries. You want to become a green angel? You want to become a green angel? I think you do. Yes, I would like to. Yes. I would also like to. Yes. Yes, Didi. Yes, I will like to. Yes. Here you can, I put it in the chat also, so you can see it. There you can meditate to the green angel. Yes. So I say thank you very much now, and I hand back to the brothers from the education wing, and I'm so happy to meet you. And I hope we will meet in person one day. Then we will go together and lie on the grass, and we will hear the grass talking to us. Okay, I say thank you very much. Thank you so much, sister. Yes. She connected with us, and everyone, kindly wave your hand, kindly wave back to sister. Thank you so much, sister. Thank you, and I'm sorry about the disconnection, but you managed so well. Yeah, no issues, sister. So we thank sister Sonia. She connected with us, and she has been working not only as a meditation instructor, but also for the environment. And it was such a beautiful, basically the meditation experience what I had, and it was what I felt was that this is the relationship that we are missing with the nature, and to build up that relationship once again. And these children were able to listen to the mother nature, birds, stone, and trees. Maybe our elders and seniors are not able to do so. So what is our responsibility now is that us being children, if we could listen to mother nature, we can basically help our seniors as well to listen to mother nature, right? And what a beautiful depiction of the carrot. We understood that even the carrot had a soul sparkling in between. And yes, it was a very, very beautiful session that we had. And we thank Sister Sonia to be with us, right? And everyone. Okay. Sister, just we want to show you a few of the plants that children had planted. So if you give 5 more minutes. Okay.
Last to last week, we gave them a task to. You can see my screen. Yes. Okay. So the kids had planted trees, plants in the gardens, and many of them had labeled them with the virtues. Okay. So this type of they had this. This is Abhashi Tripathi from Ghaziabad. Then this is Akansha Gohil. Wow. Sorry. This is Aditi Shukla from Bhopal. This is Aditi from Lucknow. This is Aditi from Kolkata. This is Ambika Srivastava from Patna. This is Anjali Shah from Nepal. This is Ankit Pirana from Gujarat. This is Antra and Anupriya. Aradhya from Dehradun. Athar from Jaipur. Sorry, I think it's not Athar. It's someone else. This is Athar. And this is Avni. This is Ayushi Devi Darshini. This is Shreya Balmukund. Bhakti from Spain. Anya Shukla from Bhilai. Shika Shaw from Kolkata. Shavi Goyanka from Ranchi. Danika from Bangalore. You can send me all of these photos. I will put in a newsletter and share with the whole world. Okay. I will put it on our website, and I will share it with the whole BK world. Sure. And they had some of them had also gave a beautiful meditation commentary for the plants also. Okay. This is a little Hamish from Australia. She's just 6 years old, 5 or 6 years. And they had some of them had also done experiments with the plants. They had what we one with I will show you that video also. One with virtue and one with vices, and they had recorded the germination of the seeds also. Wow. So this is Kirtana from Spain. And Kanakana from Ahmedabad, Krisha Ochani. This is Kush Verma. He did the experiment with one cup with love and one with sadness and other things. And this is the result you can see. Yeah. This is Manisha Amazing. Manvi Rana, Mayank Chaudhary, Mayushri Rahul Shinde, Meera Rathi, Nancy Mishra, Nivedita, Niharika, Nishchal Purjain, Riya Singh from Abu Road, Priya Ranjan, Raina Sharma, Ritik Goenka, Ritik Parwani, Dishita from Bangalore, Rudra Mishra, Rusika from Mumbai. She had germinated weed grass. This is Anvi from California, money plant, and this is Samiksha. Yeah. So please send all of this on a mail. I will make a beautiful newsletter out of it and share with the world. Okay. Fantastic job you're doing. Thank you. I'm so glad. This is the last one, Yutika. You have joined Brahma Kumaris environment team. Okay. It's an army now, sister. So we have here with us Sister Priyanka also. Okay, I will have to go. Okay, no problem, sister. Yeah. Okay, Priyanka, hello. Okay, Sister Priyanka. Hello, Om Shanti. Om Shanti. Okay, sister. Thank you, sister. Thank you. Om Shanti, everyone. Om Shanti. आप लोगों ने बहुत ही मतलब मुझे लगा भी नहीं था कि 2 वीक्स में आप इतने मिरेकल्स कर लोगे एंड सब में हिंदी इज ओके भाई जी आप कंटिन्यू कीजिए दीदी आ रहा है ओके मैं बता देता हूँ तब तक पुरान भैया. So now
all of us, हम सभी ने सुना सिस्टर सोनिया से, and it was a very beautiful सेशन, एंड सिस्टर सोनिया के बारे में भी जाना, और उन्होंने कितना सुंदर तरीके से बहुत सिंपली सबको बता भी दिया। अभी हमारे साथ सिस्टर प्रियंका जुड़े हैं, सिस्टर प्रियंका पाटिल। शी इज ऑल्सो अ वेरी बिग एनवायरमेंट एंथुसियास्ट, और काफी लंबे समय से एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हमारे साथ गाइडेंस भी शेयर करेंगे। और आपने देखा होगा सिस्टर कि कितना सुंदर तरीके से, मैं तो मेरे को वो स्पेसिफिकली वो फोटो पे मेरा ध्यान गया जिसमें हेट्रेड और लव है। लव वाले में कितना जर्मिनेशन कितना अच्छा हुआ था, हेट्रेड वाले में कितना नहीं हुआ था। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल एक्चुअली। और जो अभी हमने प्रैक्टिस किया अभी पीछे मेडिटेशन जो किया, शायद जो वाइब्रेशंस है वो बहुत काम करते हैं, तो हमने प्रैक्टिकली समझा, राइट एवरीवन? आई थिंक हर कोई इस बात से एग्री करेगा कि जो भी वाइब्रेशंस है वो हमारे ऊपर भी और नेचर के ऊपर भी काम करते हैं, राइट? सो वी वेलकम सिस्टर प्रियंका। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। एक्चुअली 2 वीक्स बिफोर हमने जब ये टास्क दिया था, तो हमने सिंपली ये टास्क कैसे दिया था कि यू हैव टू टेक अ पॉट एंड उसके ऊपर जो भी वर्च्यू है के ऊपर लगाना है, रिमाइंड करता रहेगा बार बार कि व्हाट इज द वर्च्यू, एंड दैट वर्च्यू हमारे अंदर इनबिल्ट करने के लिए। एंड बच्चों ने तो उसको इतना अच्छे से अपनी लाइफ में ले लिया, प्लस वो मतलब उन्होंने इतने सारे वर्च्यूज लेकर पौधे लगा दिए कि आई थॉट कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हर कोई एक एक भी लगा दे तो भी ये प्रकृति के लिए बहुत अच्छा होगा, एंड उनके खुद के अंदर भी सीड जर्मिनेट होने के लिए जो भी वर्च्यूज है उनके, ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये तो इट्स लाइक अ वंडर एंड मिरेकल टू कि ये लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ भी आए कि व्हाट इज मतलब वर्च्यूज एंड वाइज, मतलब वो लव एंड सैडनेस वाला, दे आर एक्चुअली लुकिंग सैड, कि अगर वो हमने पॉट भी देखा होगा तो वहां पे सॉइल का स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग वो सब कुछ ऐसे ही था। सो कि ये इट्स लाइक कि इसका बहुत इम्पैक्ट, जो मैंने सोचा था मुझे लग रहा था कि लिमिटेड होगा, बट इट्स लाइक कि ये बहुत ही क्या कहते हैं, इम्पैक्ट का मोमेंटम बहुत ज्यादा मल्टीफोल्ड था। So proud of you all. ओके दीदी, ये कुछ 1-2 वीडियोस में अभी दिखाना चाहता हूँ जो बच्चों ने भेजे थे। जी जी। ओके, तो ये हेलो, ओम शांति। मेरा नाम कुश वर्मा है और आज का टास्क जो दिया था हमें वो है प्लांट्स एंड वर्च्यू। तो इस एक्सपेरिमेंट में मैंने दो पॉट्स लिए। एक पे लिखा है हेट और सैड, दूसरे पे लिखा है पीस और लव। तो इसके अंदर देखते हैं कौन सा प्लांट अच्छा ग्रो करता है, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस का या पॉजिटिव वाइब्रेशंस का। सो अभी चलो करते हैं। तो पहले मैंने थोड़े मेथी के बीज लिए, उनको अब मैं डालूंगा हर दोनों पॉट में। ये डाला, फिर दूसरे में भी डाला, और अभी इन्हें कवर कर देंगे। अभी इनमें हम लोग थोड़ा पानी डालते हैं, ऐसा। दूसरे में भी, और अभी उन्होंने ये 5 यार तो आज वापस पानी देते हैं। तो ये बहुत अच्छा पौधा है, ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, ये बेस्ट प्लांट है वो। ओम शांति। तो ये जो लव एंड पीस वाला था ये उसका, और ये हेट वाला था। देखिए जर्मिनेशन में कितना फर्क पड़ता है। कुछ आप कुछ बोलेंगे? तो मैंने तो ये मेरे माँ का आइडिया था। उनने ये आइडिया दिया कि चलो एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो मैंने ये किया, तो ये सच्ची में वर्क किया और ये बहुत अच्छे से वर्क किया।
Okay, thank you. और मुझे ये से समझ में आया क्या वाइब्रेशंस हर चीज पे वर्क करता है। Okay. जी बिल्कुल। ओम शांति। आपने मैं बहुत अच्छा आकांक्षा एक्सपेरिमेंट किया है हरीश कुछ। पुरोहित श्रीरामपुर से गुरुओं की दिव्यता से आकांक्षा ने भरपूर 2-3 इस प्यारी सी बगिया में आपका कुछ स्वागत है। वीडियोस तो है। शुरुआत करते हैं तुलसी जी के पौधे से। तुलसी जी के मंजरियों को काटकर मैंने छोटे प्लांटर में बिखेर दिया था, जिन्होंने अब छोटे छोटे पौधे का रूप ले लिया है। इसके अलावा पुदीने की डंडियों को मैंने 4 से 5 दिन पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इनमें छोटे छोटे रूट्स आ गए हैं। इन सबको मैंने इन छोटे प्लांटर में लगा दिया था। गोकर्ण के बेल की फलियों को तोड़कर मैंने बीज बोए थे, जिन्होंने अब छोटे छोटे पौधे दिए हैं। मनी प्लांट में लगे हुए इस मॉस स्टिक को मैंने नारियल के छिलके और पुरानी बोरी से घर पर ही तैयार किया था। अजवाइन के पौधों को घना करने के लिए मैंने उन्हें काटकर मैंने फिर से उन्हें पॉट में लगा दिया था। ये लेमन ग्रास है, जिसे हम लोग यहाँ गवती चाय के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसे ज़रूर लगाइए। इसे दूध या चाय में डालकर और उबालकर पीने से सर्दी खांसी छूमंतर हो जाती है। बाबा दीदी भैया को धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि ओम शांति मंत्र से किया प्यार, सच्चाई, ईमानदारी, उदारता के गुणों द्वारा पौधों को दिया प्यार। दिनकर से हर पौधे में है बहार, हर पौधों में है बहार। धन्यवाद बाबा, आपके आशीर्वाद से आका की बगिया है हरियाली से सरोबार, आका की बगिया है हरियाली से सरोबार। धन्यवाद बाबा बारंबार। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो ये है आकांक्षा। आकांक्षा कुछ ओम शांति। शांति। आपके गार्डन तो बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर। इसमें बहुत सारे प्लांट्स है, जैसे कि कनहेर का है, सदाबहार का है, एलोवेरा का है, और जिसे हम विद्या का भी झाड़ कहते हैं वो भी है, और पुदीना और बहुत सारे है इसमें। थैंक यू। ओके, अभी एक श्रीजत ने बहुत अच्छा Shiv Baba, make me a planter of seeds of hope. Where there is discord, let me sow compassion. Where there is loneliness, let me sow companionship. Where there is anxiety, let me sow comfort. May the seeds I plant with your guidance and grace grow to be fruitful, one providing hope that comes from following you. Om Shanti. Om Shanti, Srijat. Om Shanti. Thank you, Didi. I wanted to plant a seed of hope. Thank you. Oh, and आपने लगा भी दिया. And you planted. Yes, Didi. हाँ. Now it will spread in the whole world. सबसे न्यारा मेरे पर जो खुद नहीं खाता, सब तो तुम्हें ही दे जाता। गहरीली कैसे भी पी जाता, मैं शुद्ध हवा तुम तक पहुंचाता हूँ। सूरज का भी ताकत हूँ, मैं हूँ जीवन का आधार। फिर भी तुम मुझे पर करते प्रहार। सुनो बात तुम कान लगाकर, वृक्षों का करना सम्मान। मैं हूँ जीवन का आधार, मैं हूँ जीवन का आधार। नमस्ते। नमस्ते। तो ये थे मयंक हमारे साथ, मयंक चौधरी। तो दिल्ली से मयंक, आपने भी बहुत अच्छी कविता सुनाई। भैया। ओम शांति।
और अभी ये हिमेश फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, छोटे भाई बच्चे हमारे। बुरहान भैया, हाँ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, आई थिंक वो फ्रीज हो गया है। फेस हो गया। हाँ जी हाँ। एक मिनट। अभी आ रहा है? हाँ जी। आ रहा है। ओके, तो ये हिमेश था, उन्होंने बहुत अच्छा प्लांट्स के बारे में बताया। हेलो हिमेश। Hello. हेलो। हेलो। What's the time in Australia now? 9:47. Okay. Thank you, Himesh. Okay. और भी दीजिए प्लान। हाँ जी, Thanks. ठीक है। तो ये मयंक ने जो नमस्ते, मेरा नाम है अंकित। मैं आज एक पेड़ के ऊपर छोटी सी कविता। तो कविता तो हमने सुन ली। तो ऐसे ही बहुत लोगों ने, सभी ने बहुत अच्छे हमें वीडियोस भेजे थे। उसमें से हमने जो बेस्ट थे वो कुछ दिखाए हैं, बाकी सभी के पोस्टर्स हमने आपके साथ शेयर किए ही थे। तो अभी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो टास्क दिया था उसको पूरा किया। अभी हम लोग क्विज खेलेंगे। अभी सब रेडी हैं क्विज के लिए? प्रियंका दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। प्रियंका दीदी, आपका आवाज नहीं आया। ऑल द बेस्ट। एंड एक्चुअली मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि दे आर द रियल स्पिरिचुअल गार्डनर्स। थैंक यू दीदी। सभी ने बहुत अच्छे से पौधे लगाए हैं एंड दे आर लाइक की स्पिरिचुअल गार्डनर्स है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर, हमें इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देने के लिए। और हम सभी ने देखो कितना अच्छा आप सभी ने आउटपुट दिया है। एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, प्रियंका दीदी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन देखिए कितना अच्छा आउटपुट आया। आप सभी को पसंद आया ये एक्टिविटी? सभी को पसंद आया? हाथ हिलाएंगे सभी। पसंद आया ना? तो इंटरेस्टिंगली मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था, मुझे एक विचार आया, मुझे एक थॉट आया कि कभी कभार हमको चोट लग जाती है ना, हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, तो तुरंत मम्मी क्या करते हैं, उस पर फूंक मारते हैं ऐसे ऐसे करके, राइट? और उसके बाद उस पर बैंडेज लगाते हैं। तो फूंक मारते हैं, फूंक ऐसे ब्लो करते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है? आप लोगों को लगता है फर्क पड़ता है? चोट ठीक होती है? होती है या नहीं होती? या मम्मी हमको ऐसे ही खुश करने के लिए करते हैं? होती है? तो देखिए आप सभी ने देखा कि दोनों काम करती है मम्मी। मम्मी हमारे को ट्रीट करने के लिए बैंडेज भी लगाते हैं, और मम्मी फिर हमारे को फूंक भी ऐसे करके हमें प्यार भी देते हैं, और हम फिर चुप भी हो जाते हैं अगर हम रो रहे हैं तो। सिमिलरली जो मदर नेचर है उसको हमें दोनों तरीके से हेल्प करना है। अभी हमने प्रैक्टिकली देखा वाइब्रेशन से कितना असर होता है। तो जैसे मम्मी हमें फूंक मार के ऐसे हील करते थे, उसी तरीके से जैसे हम वाइब्रेशन देते हैं, उससे हमारी मदर नेचर जो कि जिसको अभी चोट लगी हुई है, ऐसे वाइब्रेशन से या मेडिटेशन से वो हील होती है। और साथ के साथ प्लांटेशन करने से या जो भी ऐसे पोल्यूशन है उसे साफ करने से, इन सारी चीजों से भी उसको हेल्प होता है, राइट? सो ऑल ऑफ यू डिड अ ग्रेट ग्रेट अमेजिंग जॉब। सो कांग्रेचुलेशन सभी को। और अभी हम लोग क्विज करेंगे, राइट? भैया क्या कुछ 5-10 मिनट बाद शुरू कर सकते हैं? क्यों, अभी और क्या करेंगे हम लोग फिर? क्विज की लिंक एक्चुअली शेयर हो गई है, चैट बॉक्स में आ गई है। क्लिक करो जल्दी से, अपना नेम्स लिखो। अभी लोग क्विज का जो लिंक है वो चैट बॉक्स में है, उस पर क्लिक करेंगे, राइट? आप सभी को पता है। फिर शायद इसमें बुरहान भी है, इसमें अलग वो दिए जाएंगे, राइट? अभी आ ही गया है।
जल्दी से जुड़ जाइए, अभी 128 लोग जुड़ चुके हैं। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर जब मैं लिंक पे क्लिक कर रही हूँ, जब मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नहीं, उसमें आपको यूजर नेम आपका डाल दो, आपका नेम डाल दो, सिटी डाल दो, और अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। आप अपना नेम और सिटी डाल दीजिए। हाँ शिव्यांशी, भाई जी मेरे पास लिंक नहीं आया है। आप अपने चैट बॉक्स में एक बार चेक करो ना, हमने चैट बॉक्स में कॉपी किया है। मैंने एक और बार कॉपी किया चैट बॉक्स में, उसको क्लिक कर दो। ठीक है, देवांश कुछ पूछना है? देवांश अपने आप को अनम्यूट करो। क्विज कौन से टॉपिक में है? ये मरीन लाइफ के ऊपर है। अभी बस स्टार्ट करने वाले हैं, आप सब ज्वाइन हो जाइए, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। ओके, मैंने ज्वाइन हो गया हूँ। ओके ओके, क्या कहते हैं यश भाई, आपकी आवाज नहीं आई ब्रान भैया। आपका क्वेश्चन नरेट कीजिएगा ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं रिपीट कर देता हूँ सभी के लिए। हम लोग अभी क्विज करेंगे, चैट बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, आप सभी उस लिंक पर क्लिक करेंगे। ये देखिए अभी हम शुरू कर रहे हैं। सभी अपना नाम और अपना शहर का नाम दोनों मेंशन करेंगे। ओके, आप सभी जानते हैं काफी लंबे टाइम से क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप सभी नाम और अपना शहर का नाम जरूर डालेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस क्विज। चलिए शुरू करें। एवरीबॉडी रेडी? ड्रम रोल। चलिए शुरू करते हैं। The very first question is, what is the name of this sea creature? Dolphin, blowfish, octopus, या crab? Name of this creature? Dolphin, blowfish, octopus, crab. And time is up. Okay. The next question. What is the name of this sea creature? Prawn, clownfish, cuttlefish, yeah, sea urchin. What is the name of this sea creature? Prawn, clownfish, cuttlefish, sea urchin. क्या लग रहा है आप सबको? And time is up. Okay, interesting. Now, next question. Are you all ready? What is the name of this creature? Crab, manatee, sailfish या फिर whale? इस sea creature का नाम बताएंगे। Crab, manatee, sailfish या whale? Whale हो सकता है। Time is up. Aditya, the link is in the chat box. Time is up. Now, ready for the next question. What is the next question? What is the name of this sea creature? Cuttlefish, eel, octopus, या manatee? Cuttlefish, eel, octopus, या manatee? Interesting है ये, क्योंकि similar होते हैं। इसमें काफी confusion होने के chances हैं। देखते हैं। Time is up. अगला प्रश्न कंप्यूटर जी सामने रख रहे हैं आप लोगों के लिए, और ये आपके सामने स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सी क्रीचर? शार्क, सेलफिश, डॉल्फिन या फिर स्वॉर्डफिश? शार्क, सेलफिश, डॉल्फिन या फिर स्वॉर्डफिश? एंड अप। अगला सवाल होने वाला है 2 लाख रुपए के लिए। हम इसको कौन बनेगा करोड़पति की तरह करते हैं। अगला सवाल 2 लाख रुपए के लिए। देखते हैं अगला सवाल। कंप्यूटर स्क्रीन पर है आपके सामने। Which of these pictures is called prawn?
इनमें से किन को प्रॉन कहा जाता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ आपके सामने ऑप्शंस हैं। इनमें से किसको प्रॉन कहा जाता है? ऑफ दीज पिक्चर्स कॉल्ड प्रॉन। इंटरेस्टिंग। समुद्र पर गए होंगे तो शायद देखे होंगे। एंड टाइम इज अप। अगला सवाल 2,50,000 रुपए के लिए। Let us have a question in front of us. How do you spell the sea creature in this picture? आप इस picture को कैसे spell करेंगे? Spelling कैसे? Steelfish first, second shellfish, third is sailfish, fourth is steelfish. Time is up. अगला सवाल 3 लाख रुपए के लिए। कंप्यूटर जी के सामने रख रहे हैं। व्हाट इज दिस रेप्टाइल? कौन सा रेप्टाइल है? फर्स्ट टॉर्टोइज, सेकंड सी टर्टल, थर्ड इज ईल एंड फोर्थ इज वॉलरस। इनमें से कौन सा रेप्टाइल है? टॉर्टोइज, ईल, वॉलरस। एंड समय समाप्त। ये रेप्टाइल था। इंटरेस्टिंग। तो अगला सवाल कितने रुपए के लिए? 4 लाख। A large fat animal which has 2 long teeth called tusks that point downward. ऐसा क्रीचर है जिसके जो टस्क है वो डाउनवर्ड पॉइंट करते हैं। सील, वॉलरस, ऑयस्टर या हिपोपोटेमस? इनमें से क्या है? सील, वॉलरस, ऑयस्टर या हिपोपोटेमस? सवाल खत्म। आप लोग अगर डिस्कवरी चैनल देखते हैं या एनिमल प्लैनेट देखते हैं शायद बता पाते हैं। मैं छोटा था तो देखता था। आइए अगला सब है। 4,50,000 रुपए। हैज अ क्लियर सॉफ्ट बॉडी एंड कैन स्टिंग यू। डंक मार सकता है। ये क्या है? ऑयस्टर, मेंटा रे, जेलीफिश या ऑटर? ऑयस्टर, मेंटा रे, जेलीफिश या ऑटर? ये इनमें से क्या है? सॉफ्ट है और ये डंक मार सकता है। टाइम इज अप। अगला सवाल 5 लाख रुपए के लिए। What kind of animal is this? कौन सा एनिमल है? फ्लाइंग फिश है, स्टिंगरे है, स्टारफिश है या शार्क है? देखने में कैसा दिख रहा है आप सभी को? फ्लाइंग फिश, स्टिंगरे, स्टारफिश या शार्क? नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी आपके सामने रख रहे हैं। ये होने वाला है 5,50,000। द सी porcupine is difficult for another animal to eat because of its sharp what? Teeth, spines या arms? जो सी porcupine है ये जानवर खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसके शार्प टीथ है, स्पाइन्स है या आर्म्स है? And time is up. अगला सवाल सामने रख रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। व्हाट काइंड ऑफ फिश वाज डोरी इन द मूवी नीमो? डोरी जो कैरेक्टर था वो कौन सी फिश थी? बेटा फिश, रॉयल ब्लू टैंक फिश, ट्यूना फिश या स्नैप फिश? तो मुझे नहीं आता। रॉयल ब्लू टैंक फिश, ट्यूना फिश, अयो टाइम गया भाई। तो हाउ लॉन्ग कैन सी टर्टल्स लिव? कितना लंबा समय तक सी टर्टल्स रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? 20 साल, 150 वर्ष, 80 साल या 5 साल? 20 years, 150 years, 80 years या फिर 5 years? मेरी दादी अभी 86 साल की है, तो अब पता नहीं सी टर्टल्स कितने टाइम तक जी सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 7 लाख। कोरल इज एन एनिमल। क्या कोरल एनिमल है? फॉल्स है या ट्रू? कोरल रीफ्स जो होती हैं वो एनिमल काउंट होते हैं? फॉल्स है? क्या है ये? आप
Are we done, Burhan Bhaiya? Okay, next question. This animal is part of which classification? ये animal कौन से classification के अंदर आता है? Fish में आता है, invertebrate में आता है, crustacean में आता है या mammal में? Fish, invertebrate, crustacean, mammal. Interesting question. इसके बहुत सारी प्रजाति होती है. इस classification में आता है. Interesting question. Question is, which of these ocean animal is a mammal? इनमें से कौन सा animal mammal होता है? Starfish, dolphin, tuna या jellyfish? Very easy. आप सभी बता सकते हैं starfish, dolphin, tuna, jellyfish. Mammal. Time is up. Question for 8 lakh rupees. What color is an octopus's blood? Octopus का blood वो कौन सा कलर का होता है? Yellow, red, purple या फिर blue? The blood yellow, red, purple, blue. एक क्रैब की प्रजाति जो होती है उसका ब्लड मेडिसिन में यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these pictures is called eel? इनमें से कौन सी पिक्चर है वो eel है? First, second, third या fourth? eel क्या है? First, second. eel जो है बिजली के झटके दे देती है. Next question, we have 9 lakh rupees. In which sea no one drown? ऐसा कौन सा सागर समुद्र जिसमें कोई डूबता नहीं है? अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, रेड सी या फिर डेड सी? कौन सा सागर है जिसमें कोई डूबता नहीं? अरेबियन सी, पैसिफिक ओशन, रेड सी या डेड सी? समुद्र की डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए डूबते नहीं. क्वेश्चन. In oceans, sunlight reaches only up to a depth of. कौन सी डेप्थ तक सनलाइट पहुंचती है समुद्रों में? 300 meters, 200 meters या फिर 100 meters? 300 meters, 200 meters या फिर 100? विटामिन डी भी चाहिए तो आप लोग भी सनलाइट में बाहर निकलिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which ocean is the cleanest? कौन सा सागर है? महासागर वो cleanest है. West Pacific Ocean, South Atlantic Ocean, East Pacific Majority of marine life lives in the dash layers of the ocean. Majority marine life कौन सी लेयर? Middle, deepest, upper या फिर lower? Next question for 10 lakh rupees. The part of the oceanic zone that receives no light is called. Lowest part है oceanic zone का जो कि light receiving से क्या बोलते हैं? Benthic zone, neritic zone, photic zone, photic zone. मुश्किल सवाल, काफी मुश्किल सवाल. Next question. How much of the Earth's surface do oceans cover? 90%, 60%, 80% या 70%? जो हमारे समुद्र है वो कितना परसेंट कवर करते हैं?
काफी डरावना म्यूजिक है, मेरी भी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं आप सभी की तरह। चलिए अगला सवाल आपके सामने 11 लाख रुपए के लिए। विच अमंग दीज शार्क्स इज द लार्जेस्ट इन साइज? इनमें से कौन सी शार्क है जो सबसे बड़ी है? व्हेल शार्क, टाइगर शार्क, बास्किंग शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क। मैग्लोडॉन जो शार्क थी वो एंशिएंट टाइम में सबसे बड़ी शार्क हुआ करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दिस स्पीशीज ऑफ व्हेल। कौन सी व्हेल है? किलर व्हेल है, स्पर्म व्हेल है, ब्लू व्हेल है या फिन व्हेल है? कौन सी व्हेल है? किलर व्हेल, स्पर्म व्हेल, ब्लू व्हेल या फिन व्हेल? इस व्हेल के मुंह के ऊपर निशान होते हैं इसके फाइट्स के कारण। इंटरेस्टिंग। जायंट जापानीज स्पाइडर क्रैब कैन ग्रो अप टू, अब कितना बड़ा हो सकता है जायंट जापानीज स्पाइडर क्रैब? 50 फीट, 12 फीट, 40 फीट, 5 फीट। ओहो, इससे मेरा पाला नहीं पड़ना। 50 फीट, 12 फीट, 20 फीट, 5 फीट। Time is up. Next question for 13 lakh. What is referred to as rainforest of the sea? Rainforest of the sea के लिए रेफर किया जाता है seaweed, coral reef, algae या फिर grass. Rainforest of the sea, coral reef, algae या grass. सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समुद्रों से आती है, पौधों से कम आती है। ओशन हैज द मोस्ट कोरल रीफ्स, कौन से महासागर में सबसे ज्यादा कोरल रीफ्स हैं? इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन? Time is up. Next question for 14 lakh. That's it. फिनिश हो गया। Okay, 14 लाख तक नहीं पहुंच पाए बट जितना भी पहुंचे। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, कुछ मुश्किल थे, कुछ आसान थे, मेरे लिए भी काफी मुश्किल थे। एंड थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। वेरी इंटरेस्टिंग क्विज। ओके, अभी हम स्क्रीन शेयर, सॉरी एक मिनट। हाँ, अभी स्कोर शेयर करते हैं, लीडर बोर्ड। ओके, सभी लोगों को मजा आया क्विज में? अब मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश कर सकता हूं इसको केबीसी की तरह बनाने की। अमिताभ बच्चन जैसी मेरी भी हाइट है, लेकिन आई एम 6'2". ओके, खैर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। मैरीटाइम के बारे में जानना इसलिए जरूरी है बच्चे लोगों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है हमारी नजरों के सामने नहीं रहता, लेकिन वो समुद्रों में चला जाता है। ज्यादा से ज्यादा जो आप लोग प्लास्टिक चिप्स के रैपर्स, टूथब्रश, ये सब जो यूज करते हैं, वो आपके यहाँ से जो कचरे वाला होता है वो ले जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो जाता कहाँ है? या तो रिसाइकल होता है, और जो रिसाइकल नहीं होता वो फिर समुद्रों में, तो इसलिए उसको सेव करना है। वी हैव लीडर बोर्ड अभी हमारे सामने, बुरान भैया है ना? ओके, विजिबल है? यस, इट इज विजिबल। ओके, तो फर्स्ट है ईश्वरी। एक मिनट में स्पॉटलाइट करता हूँ। ईश्वरी, दो ईश्वरी, कौन सी ईश्वरी है? हाथ उठाएंगे। ईश्वरी मोरे हैं, ईश्वरी कटकर है। हैंड रेस करेंगे ईश्वरी। हेलो ईश्वरी, ये आप ही ने किया था? ओके, थैंक यू। अभी दो ईश्वरी थे। जब आप ना हमेशा अपना सरनेम या फिर सिटी जरूर लिखा करिए, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए।
सेकंड है हमारे साथ में श्रीजत पॉल। हेलो श्रीजत। यस भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। हेलो, श्रीजत बोल रहे हैं। आई हैव स्टडीड लॉट फॉर दिस क्विज। Many congratulations and that you have proved. अब देखिए है श्वेता एंड थैंक यू भैया। दानिशका फ्रॉम चेन्नई। So congratulations जो पोजीशन होल्डर्स हैं एंड सभी लोगों को जिन्होंने ट्राई किया। ईश्वरी को फर्स्ट 90% एक्यूरेसी के साथ एंड सेकंड इज श्रीजत with 87% accuracy. Third is Shweta from Chennai with 83% accuracy, and the list goes on. युतिका में तो नहीं है, युतिका है। युतिका ये क्विज बहुत इंटरेस्टिंग था जी, अच्छा लगा, थैंक यू। और सुधीर भी हम हर बार की तरह टॉप 10 में हमेशा आते हैं। और इसके बाद है अर्शिशा और दानिका। मैं देख रहा था तो बहुत खुश हो रहे थे जब आंसर्स आ रहे थे स्क्रीन के ऊपर। राइट। ऋषिका बुरहान में ऋषिका का भी 90% एक्यूरेसी शो कर रहा है। वो ठीक है, पर ऋषिका नाम से कोई जुड़े नहीं है। अच्छा, या तो वो यूट्यूब पर होंगे, इसमें जूम में नहीं होंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारे साथ में अनय सिंह। हेलो अनय। ओम शांति। ओम शांति। और उसके बाद में 10th पर है हमारे साथ में रेवंत। रेवंत, आप कुछ बोलेंगे? वीडियो ऑन करेंगे? अनय सिंह जो है, अनय सिंह। हेलो रेवंत। हाय। ओम शांति। ओम शांति। ओके, ठीक है। अभी तो थैंक्स। बाकी अभी आपके साथ में नेक्स्ट वीक्स और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक 2 वीक्स के हम टास्क आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं जो आपको करना है। तो फर्स्ट जो है, सभी को पता होगा कि अभी शिवरात्रि आ रही है। तो शिवरात्रि के ऊपर में एक आपको, अगर हमारी स्क्रीन दिख रही है तो आप देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक पेंटिंग कॉन्टेस्ट रखा है। तो पेंटिंग कॉन्टेस्ट जो है उसको 27 फेब, एक्चुअली संडे को, जैसे अभी सैटरडे को बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है, सेम संडे को बड़ों के लिए सुबह मॉर्निंग में होता है। तो वो उसको संडे टॉक के नाम से हम लोग कहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि पेंटिंग बनानी है, कौन से टॉपिक पर शिवरात्रि महोत्सव से रिलेटेड होना चाहिए, और उस पेंटिंग को आप टेलीग्राम ग्रुप में ना भेजकर, जो इसमें लिंक आपके साथ शेयर किए, ये लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तो उसमें आप वो पेंटिंग आप जो भी बनाते हैं उसको A3 या A4 साइज में पेंटिंग बना के उसका एक अच्छा फोटो लेके आइदर स्कैन करके, और उसमें अपना नाम, सिटी, ईमेल और कांटेक्ट नंबर मेंशन करना। आप जब वो जो पेंटिंग बनाएंगे उसके ऊपर लिख दीजिएगा, और उसको फिर आप जो ये फॉर्म है उसमें आप फिल कर दीजिएगा, और या तो फिर ईमेल पे भी भेज सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। इसकी लास्ट डेट 25 फरवरी है, जो आज 19 है, तो 25 फरवरी से पहले आपको सबमिट करना है। और इसकी डिटेल्स जो है, ये पूरी डिटेल्स हम आपके साथ में टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये केवल बच्चे नहीं है, इसमें बच्चे बड़े सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो कर सकते हैं। और जो इसके अवार्ड्स हैं वो नेक्स्ट जो कमिंग संडे है, नेक्स्ट संडे, सॉरी ये संडे नहीं, 27 को संडे को मॉर्निंग के सेशन में वो अनाउंस किया जाएगा। उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। एक बार मैं सबके हैंड डाउन करता हूं। अभी जिसको पूछना है वो अपना हाथ रेज कर सकते हैं। हाँ जी, दीपशिका। भैया मैं इसको बनाऊंगी तो फिर मैं, अगर मुझे समझ में नहीं है तो मैं यूट्यूब से देखकर बना सकती हूँ? आप देख के भले बना सकते हैं, पर आपको खुद बनाना है।
है ना, YouTube मतलब किसी का एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मतलब सॉरी डाउनलोड करके नहीं डालना है। ओके भैया हाँ जी हाँ जी। भैया मेरा भी स्कोर 77% है, फिर भी मेरा नाम लीडर बोर्ड में नहीं आया। 77 नहीं, एक्चुअली ये मतलब 2-3 चीजों से 77 में तो नहीं होगा। जो अभी हमने आपके साथ शेयर किया था उसमें 77 आपका नाम क्या है? शाश्वत कुमार साहू। शाश्वत है आपका, नीचे है 12th नंबर 14 नंबर पे है, अगर आपको विजिबल हो रहा हो। सॉरी है आपको, अभी मैं फुल लीडर बोर्ड शेयर करूंगा तो उसमें आएगा, बट आप टॉप 10 में नहीं है। ओके ओके भैया। ये पेंटिंग कंपटीशन से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लीजिए पहले। So we can like we have to do the painting or we can do the sketching also. Sketching is allowed. You can make sketch also. Bhaiya, and I just want to ask you that do you send this PDF on the Rajyoga group also? Yes, I will share it in the group. Okay, भैया मैं कह रही हूँ आपकी ना आवाज बीच में कट कट के आ रही है और स्क्रीन भी पूरी ब्लर है। अभी आ रही है ठीक से? एक्चुअली आपका इंटरनेट शायद स्लो होगा अवश्य, मेरे ख्याल से बाकी जगह तो ठीक ही आ रही है। भाई जी ने जो ये पेंटिंग कॉन्टेस्ट का ये शेयर किया था वो भी अच्छे से नहीं दिख रहा और बीच में आपकी आवाज भी कट रही थी। मेरे ख्याल से मैं अभी क्योंकि लाइव उसका मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, ठीक आ रहा है। आपका मोबाइल का नेटवर्क स्पीड शायद स्लो होगा। अभी आ गया, ठीक अभी ठीक आ गया। अवश्य का चेक करेंगे, ठीक है। अवश्य की तरफ से तो सिर्फ पेंटिंग कंपटीशन से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए। भाई जी हाँ पूछिए। वन बाय वन शाइशा पूछिए। भाई जी से कहाँ भेजना है पेंटिंग को? वो लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं ना जो omshanti.in शिवरात्रि फॉर्म, एक गूगल फॉर्म की लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, उसको क्लिक करेंगे ना, उसमें ऑप्शन आता है अपलोड का, आप कर पाएंगे। ठीक है ठीक है भाई जी, ओम शांति। ओके सिया मिश्रा एंड शिवा मिश्रा। सर हमें ये कब तक भेजना है? 25 Feb लास्ट है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। 25 Feb जो है वो लास्ट डेट है। ओके ठीक है, ओम शांति। भाई जी क्या हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं या सिर्फ बड़े पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके बड़े बच्चे सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके ओम शांति। अदिति आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? भैया हम लोग को इसमें हम स्केच और मंडाला आर्ट में जो करना हम कर सकते हैं ना? देखिए पेंटिंग या फिर स्केच दोनों अलाउ है। ओके ओके ठीक है। हृदय नाम से क्या है? हेलो ओम शांति। ओम शांति। हाँ, Hriday, he is in 2nd standard. Okay. And first time he has joined this link. So whenever he want to join, means always how he could join this. You can join with the if you are in our Telegram group. We usually share all the information in that group. So this number you must be having now. This number you must be having now. Just a minute. I am sharing the link of our Telegram group and WhatsApp group in the chat. You can join our WhatsApp group or Telegram group if you want, and you will get regular information regarding our sessions. So the number, how I'll get that number? It's in the chat. Check the chat. Chat okay, of this Zoom chat. Okay. Yeah. So I would ask the mother. Yeah. Am I audible? Yes. Yeah. So just do one thing. Click on the link, either of Telegram or WhatsApp. You'll be included in that group, and in that group we notify about all of the programs, upcoming programs, and everything else. भाई जी, Okay, Sonja बोलिए।
भाई जी हम क्या उसके शिवरात्रि के ऊपर डूडल आर्ट भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते कर सकते। भाई जी हाँ हमें वीडियो बनाना है कि फोटो बनाना है? पेंटिंग फोटो बना के पेंटिंग का फोटो ही भेजना है, इसमें वीडियो नहीं है। ओके और एक पार्टिसिपेंट को एक ही भेजना है, एक से ज्यादा नहीं भेजना। टेलीग्राम में ओके ताशवी शर्मा। भैया हाँ बोलिए ताशवी। एक्चुअली मैंने हैंड रेज इसलिए किया क्योंकि मुझे बताना था कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और वहाँ पे अभी नई साइंस सिटी खुली है, तो वहाँ पे ना एक बड़ा फिश एक्वेरियम है और वहाँ पे मैंने विजिट किया था। तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह की फिशेस भी है, तो उसको मुझे थोड़ा याद था वो, तो उस टाइम मैंने कई आंसर्स भी दिए और वो एक वाइट कलर की वेल थी, वो भी उसमें था उस एक्वेरियम में। ये एक्वेरियम में भी विजिट किया है, बहुत अच्छा सुंदर एक्वेरियम है अहमदाबाद का। ओके और किसी को कुछ पूछना है? हैंड रेस करना। भाई जी हम बोल रहे थे कि मैं किसी कोई भी फैमिली को देखकर वो भी कर सकती कि कोई भी फैमिली इसमें मैं फैमिली को अगर वो लिंक दे दूं, मेरे 2 भैया है उनको देना है तो मैं दे सकती हूँ क्या ये लिंक? पेंटिंग करना? हाँ हाँ कोई भी कर सकता है, जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो कर सकते हैं। और आज का जो क्विज है वो भी व्हाट्सएप में दे दीजिए। हाँ जी हम जरूर शेयर करेंगे। ओके हिमेश और सानवी। Can we make a video? But you can. It will be nice if you have a photographs of your painting. Just we don't need video actually. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Sanvi. Are the winners going to be depicted by the age group, or there will be 3 winners out of like all adults and kids? I had to ask them. Actually, I think it is common for everyone. There is no age group in this competition. Okay. Okay, Raina Sharma. Om Shanti. Om Shanti. Bhaiya, can you send the names of the winners of this week task? There was no winner in this task because this was not a contest yet. Actually, this was just a task. Okay. Okay. Okay, we will give the certificate to the quiz winners only this time. Okay. I think अभी और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम फिनिश करेंगे, एंड करेंगे। भाई जी। हाँ भाई जी मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कैसे होना है? आप टेलीग्राम इंस्टॉल करना आपके इसमें, और जो लिंक अभी चैट में शेयर किए ना वो क्लिक करेंगे तो आप उसमें जुड़ जाएंगे। नहीं तो भी आप टेलीग्राम इंस्टॉल करके सर्च करेंगे तो सर्च में राजयोगा फॉर किड्स सर्च करेंगे ना तो चैनल और ग्रुप दोनों आता है, आप दोनों में ज्वाइन हो जाइएगा। भाई जी मैं ऐड ही नहीं हो पा रहा हूँ, बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो। नहीं हो जाते हैं, बहुत इजीली होता है। आप पहले टेलीग्राम इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके मोबाइल में। ओके ठीक है भाई जी। अदिति अंजलि। ओम शांति भाई जी। हमें वो पेंटिंग शिवरात्रि से रिलेटेड ही बनानी है। हाँ टॉपिक शिवरात्रि है तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप उसमें मैं अभी पोस्टर आपके सभी के साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप पे, आप उसमें चेक करना, आपको पूरा डिटेल्स उसमें मिल जाएगा। ओके ओके अदिति। भैया हमें ये जो बनाना है हम उसमें